નમસ્કાર. રવિવારની સવાર શુભ સવાર. આ છે નવા ઉમંગ અને ઉલ્લાસની સવાર, એક ઉચ્ચ વિચારની સવાર, અધ્યાત્મ અને વિજ્ઞાનના સમન્વયની સવાર. આજના દિવસે મને એક કાવ્ય પંક્તિ યાદ આવે છે. તું આવ જરા પાસે અને વાત કરી જો, છોડ અંતની ચિંતા તું શરૂઆત કરી જો, પીછાતણી હળવાશને સમજાશે ખરો અર્થ, આકાશ સમી ખુલ્લી કબૂલાત કરી જો. બારી જો ખુલે તો જ આકાશ ઉઘડશે, તું બહેરી દિવાલોને રજૂઆત કરી જો. પહોંચાય ત્યાં સુધી એ જરૂરી નથી તો પણ ત્યાં પહોંચવા માટેની શરૂઆત કરી જો. તું આવ જરા પાસે અને વાત કરી જો, છોડ અંતની ચિંતા તું શરૂઆત કરી જો. મહામારી ક્યારે પૂરી થશે, પછી શું થશે, એવા અનેક પ્રશ્નો આપણને મૂંઝવી રહ્યા છે. ત્યારે પ્રવર્તમાન કોરોના મહામારીના સંઘર્ષો વચ્ચે જ્યારે માણસ માત્ર એક શારીરિક, માનસિક, આર્થિક અને સામાજિક તકલીફો સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે, ત્યારે ગણપત યુનિવર્સિટી પોતાના વિદ્યા દ્વારા સમાજના ઉત્કર્ષના ધ્યેયને સાર્થક કરવા છેલ્લા 3 મહિનાથી અનેકવિધ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ, વેબિનાર, ઓનલાઈન શિક્ષણ, લોક જાગૃતિ કાર્યક્રમ વગેરે દ્વારા પોતાની સામાજિક જવાબદારી નિભાવી રહી છે. આજનો આ કાર્યક્રમનું આયોજન પણ એક એવા જ ઉમદા ઉદ્દેશ્ય સાથે કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર ગણપત યુનિવર્સિટી પરિવાર વતીથી હું આવકારું છું આપણા આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા પૂજ્ય શ્રી જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીજી, બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા અટલાદરા વડોદરા, કે જેઓ આપણી સમક્ષ ઓનલાઈન ઉપસ્થિત છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આવકાર છે સ્વામીજી. સ્વામીજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. I also welcome Padma Shri Ganpatbhai Patel, Honorable President Ganpat University, who has joined us all the way from the USA to bless us with his wisdom. I also welcome Dr. Mahendra Sharma sir, Honorable Pro-Chancellor and Director General Ganpat University. Welcome sir. I welcome Dr. R.K. Patel sir, Pro-Vice Chancellor Ganpat University, Dr. Amit Patel sir, Pro-Vice Chancellor and Executive Registrar Ganpat University, and the entire team of Ganpat University on this auspicious day. ગણપત યુનિવર્સિટીના ધ્યેય વચન વિદ્યા સમાજ ઉત્કર્ષના સિદ્ધાંતને જેમણે શબ્દશઃ સાકાર કરવાનું બીડું ઝડપ્યું છે અને દિવસ રાત તેના માટે અવિરત પ્રયત્નશીલ છે એવા કર્તવ્યનિષ્ઠ ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રો ચાન્સેલર અને ડાયરેક્ટર જનરલ ડોક્ટર મહેન્દ્ર શર્મા સાહેબને હું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરવા માટે વિનંતી કરું છું. Sir is a seasoned scholar and an acclaimed academician. His vision and perseverance have indeed helped the Ganpat University gain unparalleled success and achieved several milestones in academics. I now request Dr. Sharma sir for his welcome address. Please, sir. Good morning, everyone, and good evening, Dada. Honorable President Dr. Ganpat Patel, distinguished speaker Swami Gyanvatsalji, my colleagues from university, Dr. R.K. Patel, Dr. Amit Patel, and all the distinguished professors and students who have joined this very important webinar on turning crisis into an opportunity. We are indeed very much thankful to Swami Gyanvatsalji for accepting our invite and making it convenient to address all the participants of this webinar on this very important topic while we are passing through a pandemic which has hit all the countries. Nobody is untouched, and without religion, without any sect, everybody is affected by this. Economies are hurt in such kind of pandemic situation where there is a turmoil going in economies, in societies, in individual lives. It is important to learn and to adopt newer practices in this new normal scenario to turn crisis into an opportunity. Swamiji has motivated and inspired millions across countries through his speeches, real life examples,
learnings from scriptures, and blessings of his Guru, Pujya Pramukh Swami Maharaj. He has a special heart for not only humanity, youth, but for Ganpat University. We are fortunate that he blessed us on every occasion. And Swamiji, you have been blessing us once a year, and we are really thankful to you that you have kept that space for us in your heart, and you have inspired our staff, our students, and all the stakeholders. And you have given really relevant practical examples, and which have brought transformation in life of several of our stakeholders, students, and staff. We are thankful to you, Swamiji, for accepting our invite. In our president, Padma Shri Dr. Ganpat Bhai Patel, lies a living example of a personality who has and is also currently turning crisis into an opportunity. If I reflect, Dada, on your 3 years as a president of the university, everyone among us knows that the university has grown threefolds in preference among students, reflected in admissions. Our campus has become greener than it was ever before, with more than 50,000 trees. And now we are, with your blessings, heading a Gaushala with 100 Gir cows. So, Dada, it's your perennial blessings and your experience that you have brought in. 3 years in a row, we are ranked as the best placement providing university in the state of Gujarat. We are, in the nutshell, more sustainable than we were ever before. I was referring to one of the texts of, I was fortunate that I got the treasure of Dada's books in his shelf, and I was reading Khalil Gibran, and I came across the Lebanese American philosopher, and on values, he wrote a very short story, and I would take this opportunity, Swamiji, with your permission, to read that small story. Uh, Once a man unearthed in his field a marble statue of great beauty, and he took it to a collector who loved all beautiful things, and offered it to him for sale. And the collector bought it for a large price, and they parted. And as the man walked home with his money, he thought, and he said to himself, how much life this money means. How can anyone give all this for a dead carved stone buried and undreamed of in the earth for 1,000 years? And now the collector was looking at his statue, and he was thinking, and he said to himself, what beauty, what life, the dream of what a soul, and fresh with the sweet sleep of 1,000 years. How can anyone give all this for money, dead and dreamless? So it is about how you keep the perspectives in place when things are changing in front of you. On this note, I welcome one and all for this very important session, and in particular, we are gratified by Swamiji's acceptance of our invitation and Dada's presence while he is having an evening and night there, and agreeing to inspire all of us in such a crisis of COVID-19. Thank you. I welcome you all. Thank you, Sharma sir, for your thought-provoking inputs to counter this pandemic. ખૂબ ખૂબ આભાર શર્મા સાહેબ આપના અથાગ પ્રયત્ન બદલ અને સંબોધન બદલ. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ એવા પદ્મશ્રી ડોક્ટર ગણપતભાઈ પટેલ કે જેઓ એક યુએસએ સ્થિત એનઆરઆઈ ગુજરાતી છે. તેઓશ્રીએ શિક્ષણ દ્વારા સામાજિક ઉત્થાનના કાર્યને પોતાના જીવનનો મૂળ મંત્ર બનાવી મહેસાણા ખાતે એક વૈશ્વિક કક્ષાની યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી અને આજે તેને વિશ્વ સ્તરે પહોંચાડી છે. માનનીય ગણપતભાઈ પટેલ આજથી વર્ષો પહેલા અમેરિકાની કેલિફોર્નિયા સ્ટેટ યુનિવર્સિટીમાં પસંદગીની બ્રાન્ચમાં એડમિશન ન મળવાના સંઘર્ષને કઈ રીતે સફળતામાં ફેરવી શકાય તેનું જીવંત ઉદાહરણ છે. I am excited to announce that Ganpatbhai Patel, alumnus of Cal Poly Pomona and patron chief and president of Ganpat University in Gujarat, India, has received an honorary Doctor of Science degree on May 17th
At the College of Engineering ceremony, the degree is conferred in recognition of Mr. Patel's extraordinary contribution and remarkable commitment to Cal Poly Pomona and ongoing philanthropic efforts that have so greatly benefited our university, our community, and thousands of young people in India. ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ પદ્મશ્રી ડોક્ટર ગણપતભાઈ પટેલ, જેઓ અમેરિકામાં પેટ પટેલ અને ભારતમાં દાદાના ગુલામના નામથી ઓળખાય છે. દાદા એટલે પ્રેમ, ટેકનોલોજી, શિક્ષણ અને સાહસનો સમન્વય. હું માન્ય દાદાને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરવા માટે આમંત્રિત કરું છું. પ્લીઝ સર. Thank you. Thank you, Anand Bhai, for the kind introduction. I want to say one thing about the California State University. 50 years ago, that university was denying me from the admission. Just this year, I am only the second one that they are giving honorary PhD degree. So to the young generation, to the youngster, I want them to know that you don't need to wait for the crisis. You can convert yourself into opportunity anytime, in any circumstances. But during this crisis period, we must excel, because it is like this is like a slope. So when you are climbing the slope, then you have to work a little bit harder. So with that, good morning to everybody. Pujya Gyanvatsal Swamiji, Pranam. And thank you from the bottom of my heart for accepting the invitation today. You have always supported us. And I love to listen your talks. I have done it many times, personally, on the YouTube, everywhere. Our Pro-Chancellor, Dr. Sharma, thank you for initiating and organizing such a very important provoking session. Good morning to everyone on this beautiful Sunday morning. Crises are there, and we must take advantage of the crisis rather than sitting in the one corner and crying about it. So during this crisis, there is going to be a lot of lifestyle changes, working from home, social distancing, our habit will change. More focus on the health and hygienes. Technology will change. So the new opportunity will arise. All we have to do is keep our eyes and ears open and take advantage of the opportunity. So with this corona crisis, because we can't go too much from out of the home, I and Dadi lately have been watching Ramayana series, Mahabharata series, and right now we are watching Krishna series. So today, there was an episode was that Sudama was visiting Krishna after a long time. And Krishna was sitting there with his three Ranis, Rukshmani and the other two. And they showed Krishna showed all the old life when they were students. Sudama ate chana, ચોરી કરીને એકલા ખાઈ ગયા, એ બતાવ્યું. પછી રૂક્ષ્મણીએ પૂછ્યું કે ભગવાન, આ સુદામા ચણા ખાઈ ગયા હતા એટલા માટે તમે એમને દંડ આપ્યો, આખી જિંદગી સુધી એમને કંગાલ રાખ્યા? કૃષ્ણએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો, નહીં દેવી, मैं किसी को दंड नहीं देता, वो तो उसका कर्म था. એટલે આપણને બધાને આપણા કર્મનું ફળ મળે છે. मैं तो फक्त मुक्ति ही देता हूं. એક બાપુ હતા, એમને નવો ઘોડો ખરીદ્યો. ચાલ બજારમાં ફરવા જવું. તો ફરતા હતા,
એટલે ઘોડો થોડો તોફાની હતો. કોઈએ પૂછ્યું, બાપુ ક્યાં જવું છે? બાપુ ક્યાં? ઘોડાને પૂછો, ઘોડો તોફાન કરે છે. એટલે ઘોડો મારા કંટ્રોલમાં નથી. આપણી જીવનશૈલી એવી થઈ ગઈ હતી કે આપણા ઘોડા આપણા કંટ્રોલમાં નહોતા. એટલે કોરોના આવી ગયો. કોરોના આવી ગયો એટલે હવે મર્યાદા પણ આવી ગઈ. મર્યાદા આવી ગઈ, આપણી જીવનશૈલી બદલાશે. જીવનશૈલી બદલાશે એટલે આપણી રહેણીકરણી બદલાશે. રહેણીકરણી બદલાશે એટલે આપણી જરૂરિયાતો બદલાશે. અને આપણી જરૂરિયાતો બદલાશે એટલે નવી જરૂરિયાતો ઉત્પન્ન થશે. એટલે નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી ઉત્પન્ન થશે. So changes always creates opportunity. So that's another thing that I wanted to say. હવે સ્વામીજી બહુ સરસ વક્તા છે, આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. મારે આના વિશે બહુ વાત નથી કરવી. મેં તો સ્વામીજીને, આપણે તો બધા સંસારી હોઈએ છીએ, સ્વામીજીને મેં સાંભળ્યા છે. આપણા સંસારીઓની વાત પણ આપણા કરતા એમને વધારે ખબર હોય છે. આપણી શું મુશ્કેલીઓ હોય છે એ પણ એમની જોડે સોલ્યુશન હોય છે. એટલે ચાલો આપણે સ્વામીજીને સાંભળીએ અને અત્યારે જે આ કોરોના ચાલી રહ્યો છે એને આપણે બેનિફિટમાં કેવી રીતે ચેન્જ કરી શકીએ એ જોવાનું છે. અને કોરોના જેવી બીમારીઓ તો પહેલા પણ આવેલી છે. કોલેરા હતો, ટાઇફોઇડ હતો, બધું ઘણું ઘણું હતું. એટલે તો આવશે અને જશે. પણ એમાંથી આપણે નવું શું શીખવાનું છે? એમાંથી આપણે કે હાઇજેનિકલી વી શુડ બી ક્લીન. આપણે જે બહુ સ્લોપી થઈ ગયા હતા જીવનશૈલીમાં, એ આપણે સ્લોપીનેસ કાઢી નાખવાની છે. આપણું જીવન કઈ રીતે જીવવું એ શીખવાનું છે. બસ હવે હું મારી વાણીને સમાપ્ત કરું છું અહીં આગળ. બધાને જય સ્વામિનારાયણ. અને સ્વામીજીને again I want to thank you Swamiji for giving us this opportunity. ખૂબ આભાર સાહેબ. હવે સમય છે આજે ગણપત યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી ઓનલાઈન વેબિનાર દ્વારા એક એવા વક્તાશ્રીને સાંભળવાનો, માણવાનો, એમની પાસેથી જાણવાનો કે જેઓ શ્રીનું નામ જ તેઓ શ્રીની ઓળખાણ માટે પૂરતું છે. ઉપસ્થિત તમામ ભૌતિક શ્રોતાઓના ખૂબ ખૂબ મોટા ભાગ્ય છે કે આજે આપણે એક એવા વક્તાશ્રીના સંબોધનને ઝીલવા માટે જઈ રહ્યા છીએ જેમણે વિશ્વ વંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની નિશ્રામાં બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના એક સંત તરીકે અનેકવિધ સેવાઓ આપી છે. પોતાના સચોટ અભ્યાસ અને બહોળા અનુભવની એરણ પર ચકાસેલું જ્ઞાન આજે તેઓ આપણી સમક્ષ પ્રવચનના માધ્યમથી રજૂ કરશે અને આપણે સૌ તેઓ શ્રીના આશીર્વચન એકાગ્ર મને ઝીલીશું. તેઓ શ્રીના પ્રવચન પૂર્વે તેઓ શ્રીનો ટૂંકમાં પરિચય કેળવીએ. પૂજ્ય જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીએ ઈસવીસન 1992ની સાલમાં પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વરદ હસ્તે અક્ષરધામ ગાંધીનગરના ઉદ્ઘાટન સમયે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પૂર્વાશ્રમમાં તેઓ શ્રીએ બીબીએમ વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતેથી બીઈ મિકેનિકલનો અભ્યાસ કરેલ છે. અભ્યાસમાં ખૂબ જ તેજસ્વી રહી ચૂકેલા પૂજ્ય જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીએ ત્યાગીની દીક્ષા ગ્રહણ કરી. ત્યારબાદ બીએપીએસ સંસ્થાના મંદિરો ખાતે વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાયા. તેઓ શ્રીએ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે પ્રમુખ સ્વામીના વ્યક્તિગત ઇન્ટરપ્રિટર તરીકે વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન સેવાઓ આપી છે. તેઓ શ્રી આફ્રિકા, યુરોપ, ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ વગેરે દેશોમાં વિવિધ સેમિનારોમાં પોતાનું વક્તવ્ય આપ્યું છે. તેઓ શ્રીએ એસઆઈઆરસી ઓફ આઈસીએઆઈ તિરુપતિ, ડીઆરડીઓ, ડીઆરડીએલ હૈદરાબાદ, આઈઆઈએમ ઇન્દોર, સમગ્ર દેશના વિવિધ લાયન્સ ક્લબ અને રોટરી ક્લબ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી લિમિટેડ મુંબઈ, જામનગર, બરોડા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, વીસીસીઆઈ, વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા રિજનલ કાઉન્સિલ ઓફ સીએ એટ મુંબઈ એન્ડ બરોડા, જયપુર મેડિકલ એસોસિએશન, સુરત મેડિકલ એસોસિએશન ખાતે પોતાના વક્તવ્યોનો લાભ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત ઘણી બધી કોલેજ અને યુનિવર્સિટીઓ ખાતે પણ પોતાના વક્તવ્યોનો લાભ આપ્યો છે. હાલમાં તેઓ શ્રી બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર અટલાદરા વડોદરા ખાતે વિવિધ યુવા પ્રવૃત્તિ, સામાજિક પ્રવૃત્તિ અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ સંભાળે છે. આ સાથે હું વિનંતી કરું છું પૂજ્ય જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીને કે તેઓ પોતાના વક્તવ્યથી આપણા સૌમાં નવા વર્ષના આ કોરોના પેન્ડેમિકમાં આગળ કઈ રીતે સફળતા પ્રાપ્ત કરવી
એ વિષય ઉત્સાહ અને ઉમંગ ભરી દે તેવો શ્રીના વક્તવ્યનો વિષય છે ટર્ન ધ ક્રાઇસિસ ઇન્ટુ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, સંકટને સફળતામાં ફેરવવું. પૂજ્ય જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, રાધા કૃષ્ણ દેવની જય, સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, મહંત સ્વામી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. પ્રથમ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં વંદન સાથે ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને પ્રગટ ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં વંદન સાથે વિશેષ તો વડીલ મુરબ્બી શ્રી ગણપતભાઈ પટેલ, આપને ખાસ જય સ્વામિનારાયણ. યુનિવર્સિટીના પીવીસી ડોક્ટર મહેન્દ્ર શર્મા, આપને પણ ખાસ નમસ્કાર, પ્રણામ, જય સ્વામિનારાયણ. અને આજના કાર્યક્રમના સંચાલક અને આયોજનમાં જેમનો મહત્વનો ફાળો છે એવા સત્સંગી આનંદભાઈ, ખાસ જય સ્વામિનારાયણ. આપ સૌ શ્રોતાજનો, વેબિનારમાં ઉપસ્થિત આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓ, ફેકલ્ટીઝ અને અન્ય આપ સૌને નમસ્કાર, ગુડ મોર્નિંગ અને જય સ્વામિનારાયણ. ખાસ તો પહેલો પ્રશ્ન એ પૂછવાનો કે આપણે લેંગ્વેજ કઈ રાખી છે, ભાષા, કારણ કે મેસેજીસ બધા અંગ્રેજીમાં માટેના બહુ જ આવ્યા છે ઓનલાઈન. આઈ એમ કમ્ફર્ટેબલ ઇન બોથ ધ લેંગ્વેજીસ. Both the language. હેલો. Both the languages, Swamiji. You can speak in English. You can mix also at appropriate time, and language won't be a barrier. Okay, fine, thank you. So now coming to the topic, that turning crisis into opportunity. We know that we are all passing through a crisis, COVID-19 pandemic. And as Dr. Sharma said, that none of the country is left out of it, but still the situation is going to be big in our country. Still the month of June, July, and half of August perhaps is forecasted by the experts, doctors, and directors of AIIMS, All India Institute of Medical Sciences in Delhi, and ICMR. Still India is yet to see the worst of it. So it's still going to peak, as they say. And when we are facing such a situation in our life, perhaps this generation is facing it for the first time, a serious lockdown, a social distancing, sanitization, mask, that is wearing mask. So we have been put in this situation. Now, if you get bogged down by this crisis, if you sit back and start crying, as Dr. Ganpatbhai said, if you sit in the corner in the room and start crying, nothing is going to happen. You will worsen the situation within yourself as well. One situation is worsened outside, and you will worsen another situation with. So, like, don't sit back and cry. That is not a human dignity. Human dignity is to stand up, face the situation head on, and try to find out a way out. That is how great personalities will walk this earth and designed and defined a path for coming generations. Books of history is full of live examples of people of such caliber. But if you get bogged down, you will get into stress, you will get into depression, you will have an emotional outburst, maybe an emotional breakdown. So if you get bogged down by crisis and don't have the thought of coming out of that crisis, working your way out of this crisis and turning this crisis into an opportunity, into some success, then you will pass through severe stress and tension. What will happen to me? How will I come out of this? All these thoughts paralyze you. These are all imaginary fears that will cripple you.
So don't get bogged down by imaginary fears. Let the situation come in front of you. If any batsman, for example, goes out to bat and starts fearing the opposition bowling while just coming out of the pavilion and entering the field, half of his morale is down. But he keeps the attitude of facing the bowlers, sticking to the wicket, playing the best that he can against that opposition and try and make runs. But if he gets bogged down by a crisis that already we are 5 down for 40 and we need to score 250 to win, and I'm the sixth batsman in, how would I be able to do that? No. Let's go there. Let's try to work out and let's see what happens. So when you keep this fundamental basic thought and attitude in your life during crisis, you got a chance to turn that crisis into an opportunity. This is the first and the foremost thought that you get. Maybe opportunities are yet to open for you. Maybe some success is a bit far away for you, you're still a student. But still, keeping that attitude and thought that, well, I'm prepared for an opportunity. If it crosses my path, I'll grab it. If it doesn't cross my path, I'll try to find it. Grab the coming opportunity, or if the opportunity does not come, try to find it. This attitude and this basic thought process is the first and the foremost, the fundamental and the primary need for you to come out of crisis. Because if you don't come out of crisis, as I said, you will be bogged down with stress and tension, and you'll be surprised to know that more than 340 million people, that is 34 crore people all over the world today, are suffering from this paralyzing mental disease that is called stress. And more surprising that out of this 340 million, more than 20 million people, that is 2 crore people, they attempt suicide every year because of this stress, Yes, sir. tension. Stress, tension, depression, anger. Then, if you get bogged down, you will pass through all this and you will get disturbed. And you know, the stress, the stress and this tension, this anger, emotional outbursts, they all have an effect on your body, on your mental state, on your emotional state of affairs. They have proved, it has been scientifically, experimentally, clinically proved that such stresses during crisis, such tensions or emotional outbursts during crisis can weaken your immune system, can increase your heart rate and make it uneven, can increase your blood pressure to the extent that it can cause cancer. And more importantly, to you students, and most of the students are here hearing this webinar live, that any type of depression or stress experienced during such crisis for a longer time affects hippocampus, which is a part of the brain. That part of the brain is called hippocampus. It can affect or even damage to some extent the hippocampus, which can ultimately lead to loss of memory and loss of intelligence in your life. Excuse me. Hello, સ્વામીજી. Sorry to interrupt. ઘણા બધા શ્રોતાઓ જે છે એમની વિનંતી છે, નમ્ર વિનંતી છે કે આપ ગુજરાતી અથવા હિન્દીમાં જે ઓડિયન્સ જોઈન થઈ છે તેમને આપને સાંભળવાની ઈચ્છા છે. વાંધો નહીં, એટલે જ મેં તમને પહેલા પૂછેલું કઈ ભાષા વાપરી, તમે મને અંગ્રેજી કીધું એટલે મેં અંગ્રેજી ચાલુ. સોરી. એ વાંધો નહીં, ગુજરાતી અને હિન્દી આપણે મિક્સ કરીએ. Is it okay? થેન્ક યુ. તો આપણે જે વાત કરી રહ્યા હતા એ વાત એ છે કે effects of this stress, effects of this tension can be severe. आपके शरीर में, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी इमोशनल हेल्थ में ये बड़ी तकलीफ, ये क्राइसिस ला सकती है. अगर आप क्राइसिस की वजह से डिप्रेशन और टेंशन में आ गए, आपको जान के ताज्जुब होगा कि कनाडा में जो मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का एक विभाग है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेस.
और इस विभाग में अपनी खुद की लाइब्रेरी में 1.5 लाख पुस्तक है। आ 1.5 लाख पुस्तक स्ट्रेस ઉપર છે, બીજા બધા વિષયો ઉપર પણ ઘણા પુસ્તકો છે, but imagine 1.5 lakh books on stress management, stress handling, how to overcome stress, how can stress not enter your mind, सभी प्रकार की पुस्तक है। 1.5 लाख पुस्तक 1 लाख से ज्यादा ऑथर ने लिखी, मतलब इस ऑथर्स ने अपने आसपास नजदीक में परिवारजनों में मित्र वर्तुल में कई प्रकार के स्ट्रेस देखे होंगे और ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मतलब कितना स्ट्रेस आज समाज में है, ये क्राइसिस कोविड-19 स्ट्रेस आपका बढ़ा भी सकती है। तो पहली बात इस प्रवचन में टर्न द क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी में हम ये जानना चाहते हैं और ये तय करना चाहते हैं कि ये क्राइसिस को हम अपने मन पे सवार नहीं होने देंगे। कम वॉट में है, परिस्थिति गंभीर है, तकलीफ है, लेकिन मैं उसको नॉन एक्सेप्टेंस देता हूं। I reject it. Physically, I have to obey all the norms of social distancing, sanitization, face mask, everything. And very carefully, we need to observe. We need to do this. लेकिन mentally, मैं इतना strong रहूंगा कि ये क्राइसिस से मैं बाहर आ सकता हूं। तो चिंता मत करना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी परिस्थिति बहुत गंभीर थी, वहां से भी मनुष्य बाहर निकल आया, बड़ी तरक्की की। वर्ल्ड वॉर 2 दूसरा विश्व युद्ध तो 7 साल तक चला था, उस वक्त भी परिस्थिति गंभीर थी, उसके बाद भी मनुष्य बाहर निकल आया, इतनी सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस किए। तो ये कोविड-19 तो 2 विश्व युद्ध से कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी हम बाहर आ जाएंगे। इतना ही अपने आप को कहना है कि एक छोटे से वायरस में अगर भगवान ने इतनी शक्ति रखी, एक छोटे से वायरस जो हम आंख से नहीं देख पा रहे, उसमें इतनी बड़ी ताकत है, तो मनुष्य तो भगवान का श्रेष्ठ सर्जन है। वी आर द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। તો આપણામાં તો ભગવાને કેટલી બધી શક્તિ મૂકી હોય, આ વાયરસ કરતા અનંત ગણી મૂકી છે, અને આપણામાં ઇનબિલ્ટ ટેન્ડન્સી છે, ઇનબિલ્ટ એક ડોમિનન્સ પાવર છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ જે પૃથ્વી પર સર્જાતી હોય એને આપણે ઇઝીલી ઓવરકમ કરી શકીએ છીએ. ઓફકોર્સ ઇટ ટેક્સ ટાઈમ, ઓફકોર્સ ઇટ ટેક્સ સમ એફર્ટ, બટ on the longer run, at the end of the day, at the end of the story, it is always human beings who are victorious. કાયમ માણસ જ વિજેતા બને છે. કોવિડ-19 માં પણ માણસ જ વિજેતા બનશે. એટલે આવા થોડા વિચારોથી આપણે જરા બેઠા થઈએ, ઊભા થઈએ, દોડવાનું નક્કી કરીએ. Now point number 2, how to turn that crisis into opportunity. Point number 1 was don't bog down by crisis, stand up, decide to walk, grab an opportunity. If an opportunity does not come on your way, find that opportunity. એ બધી વાતો આપણે સમજ્યા. એટલે આપણે ક્રાઇસિસ માંથી બહાર આવવાનું નક્કી કર્યું, એક અભિગમ તૈયાર કર્યો કે મારે ક્રાઇસિસ માંથી બહાર આવવું છે. હવે એ ક્રાઇસિસ એટલે કે એ સંકટ જે છે, એ સંકટને આપણે અવસર એટલે કે એક મોકો એટલે કે એક તક એમાં કેવી રીતે ફેરવી શકીએ. તો પહેલી વાત છે નોલેજ. જેટલું તમારી પાસે નોલેજ હશે ને એટલું તમે કોઈ પણ ક્રાઇસિસ માંથી વહેલા બહાર આવી શકશો. સો રાત દિવસ પ્રયત્ન કરવાનો કે હું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકું. તમારા ફિલ્ડ, ઇફ યુ આર એન mechanical engineering student, electrical engineering, electronics engineering, whatever, decide to be a student lifetime. 90 વર્ષની ઉંમરે પણ તમારી પાસે જ્ઞાન પીપાસો આવી જોઈએ. You should be knowledge thirsty. તો નોલેજ થી છે ને એ માણસ એ ગમે તે સંજોગમાં એક રસ્તો મેળવી શકે છે. તમારી જેવી એક યુનિવર્સિટી છે, IIT, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એટ મંડી. हमने 4-5 દિવસ પહેલા તમે ન્યૂઝપેપરમાં બહુ સરસ વાત સાંભળી હશે કે IIT મંડીના વિદ્યાર્થીઓ, the students of your age, college students, undergrad students, they decided that we want to turn this crisis into opportunity. આપણે આ સંકટને તકમાં ફેરવવી છે. બધા ભેગા થયા એટલે કે ઓનલાઈન ચર્ચાઓ થઈ.
અને ચર્ચાના અંતે એ લોકોએ એક વાત પર આવ્યા કે કેન વી મેક સમ પ્રોડક્ટિવ એલિમેન્ટ, પ્રોડક્ટિવ સબસ્ટન્સ out of waste material that could be very useful to COVID-19 situation. ये एक विचार एमना मन में आया, एक विचार मन में आ गया कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम कोई प्रोडक्टिव मटेरियल बना सकते हैं। प्रोफेसर्स को बात की, टेक्निकल एक्सपर्ट से कुछ डिस्कशन हुआ और ये नतीजे पे आए कि हम लोग जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उससे कुछ बनाने का प्रयत्न करें। हम पानी पी के ये प्लास्टिक बोतल गार्बेज में फेंक देते हैं, जूस पी के ये फेंक देते हैं, उससे हम कुछ कर सकते हैं, किंतु एनवायरनमेंट को भी बड़ी मदद हम कर सकते हैं। दैट इज वी टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एक प्रोडक्टिव बात, एक बहुत सस्ती चीज लेकिन कोविड-19 में उपयोगी हो ऐसी कुछ बना सकते। तो ये तो रॉ मटेरियल तो मन में तय आ गया कि ये वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से बना। फिर सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व किया, उसके नैनो मेम्ब्रेन्स डेराइव किए और आप सभी को जान के आश्चर्य लगेगा कि आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली दे क्रिएटेड फ्रॉम दिस nano non-woven membrane which suffices the need of a mask, and that to the caliber of N95. N95 mask, N95 matlab 95% of unwanted things it will not allow through its membranes, through it. तो ये बेस्ट मास्क गिना जाता है। तो ये आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स ने वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स में से वो प्लास्टिक को डिसॉल्व करते हुए नैनो मेम्ब्रेन्स डिराइव किए, उसमें से नैनो नॉन वोवन मेम्ब्रेन डिराइव किया और उसमें से फेस मास्क बनाया और ये फेस मास्क प्रयोगशाला में रखा और अनुभूति भी की। तो दिस मास्क इज इक्विवेलेंट टू N95 मास्क और इट इज वॉशेबल। They say you can use it for 30 days and you can wash it 30 times. 30 दिन तक आप ये एक ही मास्क यूज कर सकते हो, 30 बार उसको वॉश कर सकते हो, उसके बाद आपको नया लेना है। लेकिन वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स में से ये बना है तो कितना सस्ता है। तो आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स को ये विचार आया, ये विचार पे विमर्श किया, कोई टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल एक्सपर्टाइज ली और प्रयोग किया, प्रयोग में सफल हुए और आज एक बहुत बड़ी बात बाहर आई। तो आप भी गणपत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आपके पास अच्छा मार्गदर्शन है, आपके प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपको मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार हैं, आपके पास फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं। मैं तो वहां गणपत यूनिवर्सिटी में आया हूँ, लास्ट टाइम आई वाज देयर, Shri Ganpat Bhai Patel was also there and we had a wonderful time together sitting on the dais and talking to you students. तो आपके पास भी समय है, आपके पास भी बुद्धि है, आपकी बुद्धि कोई अन्य विद्यार्थी से कम नहीं है, तो आप भी अपना बुद्धि का उपयोग कर सकते हो। તમે પણ તમારી બુદ્ધિનો સારો ઉપયોગ કરી શકશો, એમાં જરાય ઓછા નથી। તમે નક્કી નથી કર્યું એટલે if you decide you can. અંગ્રેજીમાં બહુ જ મોટું વાક્ય પીટર ડ્રકર નામના બહુ જ સારા મેનેજમેન્ટ ગુરુ એ પોતે કાયમાં કહેતા કે if you decide you can. તમે નક્કી કરો ને તો થઈ શકે। એટલે પહેલી વાત આ છે કે નોલેજ, ખૂબ નોલેજ પ્રાપ્ત કરવાનું પોતાના ક્ષેત્રમાં અને એ નોલેજનો પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ કરવા માટે તકો ઊભી કરતા રહેવાની। તક આવે એટલે નોલેજનો પૂર્ણ ઉપયોગ કરવો and you can create. બીજી વાત છે ક્રાઇસિસના ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં પરિવર્તિત કરવાની કે પોતામાં આત્મવિશ્વાસ અને પુરુષાર્થની તૈયારી। તમને આશ્ચર્ય થશે કે કોવિડ-19 શરૂ થયો ત્યારે ભારતમાં N95 માસ્ક બહુ ઓછા બનતા, પણ રાજકોટમાં એક સાવ ઓછી ભણેલી વ્યક્તિ એમણે નક્કી કર્યું કે આપણે N95 માસ્ક કેમ ન બનાવી શકીએ। 140 માણસોએ કોર્ડિનેશન કર્યું અને 40 દિવસમાં એ લોકોએ મશીનરી બનાવી અને આખી એસેમ્બલી લાઈન તૈયાર કરી અને આખી એસેમ્બલી લાઈન ટેકનિકલી સાઉન્ડ તૈયાર થઈ
And now they are producing 25,000 N95 masks every day. रोज एक બીજી એસેમ્બલી લાઈન એક ત્રીજી એસેમ્બલી લાઈન તૈયાર કરી રહ્યા છે. What I mean to say, अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप पुरुषार्थ करना चाहते हैं जो मनुष्य का कर्तव्य है और कर्तव्य से बढ़ के आगे मनुष्य का गौरव भी है, तो ये कर्तव्य और गौरव को साथ में लेकर अगर आप चलेंगे तो पुरुषार्थ कर पाएंगे और आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज की वजह से आपको आत्मविश्वास आएगा, कुछ आप कर पाएंगे. तो एक कम पढ़ी हुई व्यक्ति उन्होंने तय किया, तो आज 25,000 N95 मास्क वे रोज बना रहे हैं. तो ऐसे तो कई बातें, मैंने तो आपको दो बातें कही, एक IIT मंडी के स्टूडेंट्स की बात कही और ये राजकोट में N95 मास्क बनाना शुरू हुआ वो बात आपको की. ऐसी कई बातें हैं. यू कैन टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी. आप संकट को एक अवसर में परिवर्तित कर सकते. तीसरी बात, जब संकट को अवसर में परिवर्तित आपको करना है तब be clear in your mind, be open from within, seek advice, जिसको हम प्रोफेशनल भाषा में कंसल्टेंसी कहते हैं. या आप स्टूडेंट हो तो प्रोफेसर को, लेक्चरर, टीचर को ओपन माइंडेड, ओपन हार्ट से जो प्रश्न पूछना है पूछो. आपकी जो वास्तविक परिस्थिति है वो वास्तविक परिस्थिति आप किसी एल्डर के साथ, अनुभवी के साथ शेयर करो. मन में और मन में घबराने की कोई जरूरत नहीं. મનમાં તમે લોકો મૂંઝાઓ એનો કોઈ અર્થ નથી. કોઈ વડીલ હોય, કોઈ અનુભવી હોય, કોઈ આ માર્ગે ચાલેલા હોય, જેને एक्चुअल डिफिकल्टीज फेस करी હોય, उन लोगों को मिलो, पूछो. अभी गणपत भाई ने बताया कि उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी. तो जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन, गणपत भाई को एडमिशन उन्होंने नहीं दिया, तो आज वही यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त की. मतलब ऐसे व्यक्ति को आप मिलो, ऐसे व्यक्ति के जीवन चरित्र आप पढ़े तो आपको एक दिशा खुलेगी. See, always you need expert advice. ये विद्यार्थी के मन में कई बार ऐसा होता है कि आई एम एक्सपोज टू सोशल मीडिया, मेरे पास इंटरनेट है. See, now listen this sentence what I speak very carefully. Internet, that is Google and everything social media, can give you loads and loads of information. But to convert that information into knowledge, you should have a desire. And to convert that knowledge into wisdom is altogether a different task. ये इंटरनेट और गूगल आपके सभी प्रश्न के उत्तर नहीं है, तो सिर्फ आपको माहिती, इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज और विजडम नहीं देते. वो तो आपको प्राप्त करना पड़ता है. इंटरनेट कैन नेवर एंड विल नेवर गिव यू विजडम. क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करने के लिए नॉलेज के साथ विजडम भी चाहिए. वो विजडम ये है कि आप एक्सपर्ट एडवाइस लो. जहां विश्वास है, ऐसे कोई बुजुर्ग हो, बड़े हो, जो अनुभवी हो, जो इस रास्ते पे चले हो, जिसने ऐसी तकलीफ देखी है जीवन में, उनके साथ आप विमर्श करें, खुले दिल से अपने प्रश्न कहे. मैं आपको एक प्रसंग कहूं. सचिन तेंदुलकर को हम सबने खेलते हुए देखा है. सचिन तेंदुलकर 15 साल के होंगे. He got his international debut and his first foreign trip was to Pakistan. भारत की ओर से वे पाकिस्तान टीम के साथ गए. सबसे छोटे आयु में भी थे और उस वक्त पाकिस्तान के पास पावरफुल पेस बैटरी थी. इमरान खान थे, वासिम अकरम थे, वकार यूनुस थे. और उस वक्त वासिम अकरम और वकार यूनुस तो अपनी पीक पे थे. They could swing deliveries at 95 to 98 miles per hour, मतलब 145 किलोमीटर पर आवर पे वे डिलीवरीज डालते थे. एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड पेस, डेडली कॉम्बिनेशन था उनका. तो वासिम अकरम एज ऑफ द क्रीज से अवे फ्रॉम द बॉडी डाल सकते थे, मतलब पिच होके बॉल राइट हैंड बैट्समैन के लिए आउटस्विंग होता था अवे फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड द ऑफ स्टंप. तो पीछे विकेट कीपर और 3 स्लिप खड़ी रहती थी. वकार यूनुस थे, राइट आर्म पेस थे, वो कातिल इन स्विंग डाल सकते थे.
तो बैट्समैन के लिए ये बैट्समैन भी बहुत हैरान रह जाते थे। और पाकिस्तान ने इस वक्त भारत को हराने के लिए सभी पिच पे थोड़ा थोड़ा घास रखा था, पूरा नहीं काट डाला था, ताकि स्विंग बॉलर्स को पूरी यारी मिले। पहली टेस्ट कराची में थी, सचिन तेंदुलकर वाज आउट फॉर 0, सेकंड इनिंग्स में आउट फॉर 50, टूट पड़े अंदर से। वापस पेविलियन में जब आए 15 स्कोर करके, और उस 15 रन करते करते तो उनको बहुत तकलीफ पड़ी। वॉज बिटन एन नंबर ऑफ टाइम्स बाय अकरम एंड वकार यूनुस। पेविलियन में वापस आए, ड्रेसिंग रूम में ये पैड वगैरह सब निकाले और सीधे बाथरूम में चले गए और रोने लगे सचिन तेंदुलकर। ये प्रसंग अभी 1-1.5-2 महीने पहले उनका जन्मदिन था, उन्होंने ही मीडिया में शेयर किया था और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था। रोने लगे और आईने के सामने बाथरूम में खड़े खड़े अपने आप को कहने लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं, दिस इज टू मच फॉर मी, I cannot play international cricket against such pace bowlers like Waqar Yunus and Wasim Akram. Their swing, their pace, their accuracy, their line and length are devastating. मैं तो स्कूल क्रिकेट खेलूंगा, डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया में खेलूंगा, दिस इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैं जाके कोच को बोल देता हूँ कि मुझे नहीं खेलना है। फिर तो मुंह साफ करके वापस बाहर आए। रवि शास्त्री बैठे थे, रवि शास्त्री के बाजू में आके बैठे, आज हमारे कोच हैं रवि शास्त्री, और सचिन तेंदुलकर ओपन डाउन। देखो ये करना है, जब जीवन में क्राइसिस आए, तब जहां आपको विश्वास हो, कोई अनुभवी व्यक्ति हो जो इस मार्ग पे चले हो, जिन्होंने ऐसी क्राइसिस जीवन में देखी है, उनका अनुभव क्या है वो आप पढ़ें, उनकी रीत भात क्या थी इस क्राइसिस से बाहर आने की, वो आप सुने, देखें, सोचे, अपनाने का प्रयत्न करें, तो उससे आपको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ हिम्मत मिलेगी, कुछ एक एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। रवि शास्त्री को बाजू में बैठ के सचिन ने कहा कि सर दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये बहुत पावरफुल पेस बॉलर्स है। रवि शास्त्री ने उनको डांटा। रवि शास्त्री ने बोला कि सचिन यू आर टैलेंटेड, आपके पास टैलेंट है, लेकिन आपकी गलती ये है कि यू आर प्लेइंग एज इफ यू आर प्लेइंग अ स्कूल मैच। जैसे स्कूल मैच में हर एक गेम को आप मारने का प्रयत्न करते हो, यू आर ट्राइंग टू हिट ईच एंड एवरी बॉल, सो यू आर गेटिंग बिटन। दिस इज नॉट अ स्कूल गेम, दिस इज एन इंटरनेशनल गेम। हर बॉल को आप मार नहीं सकते, ये एटीट्यूड बदल दो, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द अपोजिशन स्ट्रेंथ। ये बॉलर्स जो आपके सामने गेंद डाल रहे थे, इमरान खान, वासिम अकरम, वकार यूनुस, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। बड़े बड़े बैट्समैन उससे तकलीफ में आ जाते हैं, और जब उनका दिन होता है, वकार यूनुस या वासिम अकरम का जब दिन होता है, मतलब एक लाइन एंड लेंथ, एक पिच उसके हाथ में आ गई, तो 5-7 विकेट ले लेते हैं एक ही सेशन में। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट टैलेंट। जैसे आप स्कूल में या डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी बॉलर के सामने ऐसे ही फटके मारते थे, तो ये मत सोचना, ये मत एटीट्यूड रखना कि हर गेंद पे इन लोगों को आप मार पाओगे। यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, मतलब डिफेंस रखना। और फिर एडवाइस दी कि देखो इंटरनेशनल टेस्ट में सबसे पहली जरूरत ये होती है कि आप आधे घंटे तक पिच पे टिके रहो। तो रवि शास्त्री ने सचिन तेंदुलकर को ये एडवाइस दी कि पहले आधे घंटे तक स्कोर बोर्ड के सामने मत देखना, जम जाना, अपनी आंख फील्ड पे सेट कर देना, जो बॉलर्स डाल रहे हैं उसकी लाइन एंड लेंथ ठीक तरह से जान लेना, फिर रन स्कोरिंग चालू करना। ये एडवाइस मिली। तो ये 1989 में सेकंड टेस्ट में फैसलाबाद में सचिन तेंदुलकर गए, एंड ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल हाफ सेंचुरी, 59 उन्होंने स्कोर की। फिर उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, वापस आए पेविलियन में 59 स्कोर करके रवि शास्त्री को उन्होंने हक कर लिया। That was a golden advice from you. I stuck to the wicket for the first half an hour, didn't bother about the scoreboard. Runs will come after that, but first let me get set into the situation. तो देखो, एक छोटी सी एडवाइस सीनियर की, आप विद्यार्थी हो, बुद्धिशाली हो, टैलेंटेड हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज भी थोड़ा है, लेकिन विजडम नहीं है। विजडम तो एक्सपीरियंस से आता है।
तो जिनके पास है तो ईगो मत रखना, आई एम 9.5 scoring student, and I'm intelligent, I'm talented, so I can find my solutions. और अगर थोड़ी हेल्प चाहिए तो मैं गूगल से ले लूंगा। ये एटीट्यूड बहुत खराब है। तो सीनियोरिटी का क्या मतलब, एक्सपीरियंस पर्सन का क्या मतलब? जिन्होंने ये आपसे ज्यादा दिन देखे, चांद तारे और सूर्य बहुत बार आपसे ज्यादा बार देखे, उनका कोई वजूद ही नहीं आपके जीवन में। तो एक्सपर्ट एडवाइस से बहुत बड़ा काम होता है। तो ये विजडम, ये भी बहुत जरूरी है टू टर्न क्राइसिस। तो देखो सचिन तेंदुलकर टर्न द क्राइसिस इन हिज लाइफ इनटू अपॉर्चुनिटी, इनटू सक्सेस, एंड वी नो that a great career started thereafter, scoring 100 international tons, 200 test matches, god of cricket, master blaster, everything. मैथ्यू हेडन एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको पूछा गया था सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये कहा कि yes, I have seen God and he plays at number 4 in India. इतना मान सम्मान मिला। आज कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। तो देखो कहने की बात यह है कि यू कैन टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी बाय योर नॉलेज, बाय योर टैलेंट, बाय योर एक्सपर्ट एडवाइस, बाय योर विजडम। तो उस तरफ थोड़ा ईगो कम करके, बड़ों अनुभवी लोग हैं उनके पास से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। और एक अच्छी बात आपको सुनाना चाहूंगा कि टू टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू ड्यूरिंग द क्राइसिस कीप अ थॉट दैट मेंटेन्स योर स्टेबिलिटी। Stable from within props up some good thoughts, inspires you for some good action, and create alternate solutions. हमारे गुरु हरि थे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने ये बीएपीएस संस्था विश्वव्यापी बनाई। मैं जिस संस्था में से आता हूँ वो बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था, आपने शायद अक्षरधाम देखा होगा, गांधीनगर में अक्षरधाम देखा होगा, दिल्ली में एक सुत्ता शेखर पे, वहां दिल्ली में यमुना के किनारे है। और अभी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बड़ा अक्षरधाम जैसा कैंपस बन रहा है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। और अब 10 महीने पहले शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या देखा होगा टीवी पे कि अबू धाबी के राजा हिज रॉयल हाइनेस शेख जायद ने हम बीएपीएस संस्था को दुबई अबू धाबी एक्सप्रेसवे, शेख जायद एक्सप्रेसवे पे 27 एकड़ जमीन गिफ्ट में दी, डोनेशन में दी कि आप यहाँ एक अक्षरधाम जैसा कैंपस बनाए। उसका भी कंस्ट्रक्शन काम चालू है, फाउंडेशन पूरा हुआ है। ये प्रमुख स्वामी महाराज के विचार थे और उनका ये कार्य। आज अमेरिका में भी रॉबिन्सविल में 265 एकड़ पे अक्षरधाम बन रहा है। भव्य, अति भव्य भारतीय संस्कृति और भगवान स्वामीनारायण के जीवन और कार्य को ये अंजलि है। और हजारों लोग ये अक्षरधाम से अपना जीवन परिवर्तित करके जाते हैं। हजारों डिवोर्सेस अक्षरधाम में आने के बाद बच गए हैं। हजारों विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास के लिए प्रेरणा अक्षरधाम से मिली है। हजारों डिप्रेस्ड यंगस्टर्स या स्ट्रेस्ड यंगस्टर्स को एक एम्बिशन मिला है, एक एम मिला है, एक एटीट्यूड मिला है अक्षरधाम आने से। ऐसे हमारे पास हजारों प्रसंग है। मैं वो कहने बैठू तो कल सुबह 24 घंटे चले जाएंगे। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कार्य किया। ऐसे छोटी मोटे 1300 से ज्यादा कैंपस प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरे विश्व में खड़े किए। अक्षरधाम हो, संस्कार केंद्र हो, मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हॉस्टल हो, कॉलेज हो, 1300 campuses. 45 years he was the guru of this organization. चलो राउंड फिगर ले लो 50 साल में 1300 कैंपस, मतलब हर साल 25, मतलब हर 2 हफ्ते में, because the year is made up of 52 weeks. So every second week he came up with a campus. That is every 15th day. हर 15 दिन 50 साल तक, every 15th day he gifted an institute to the organization, a hospital or a school or a hostel or a college or Akshardham, a mandir or a sanskar kendra. Imagine, मतलब हर 15 दिन ये वाक्य शांति से सुनना। Every 15th day, Pramukh Swami Maharaj in his career spanning 50 years as guru of this organization, 45 years, round figure 50 लेते, every 15th day a land was purchased, एक जमीन खरीदी,
लीगल प्रोसेस लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज में उसका पूरा हुआ। वहां क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जो भी, वो तय हुआ। आर्किटेक्ट ने प्लान्स बना दिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने देख लिए, प्लान्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में पास हो गए, उसका फंड रेज हो गया, डोनर्स मिल गए, टेंडर्स आउट हुए, टेंडर्स तय हुए, कंस्ट्रक्शन काम चालू हुआ। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। ऑनररी व्यक्ति जो ये संस्था ये केयर करेंगे, संस्था चलाएंगे, वो व्यक्ति मिल गए, इनॉग्रेशन सेरेमनी डिजाइन होगी, इनॉग्रेट हो गया, और ये सेवा में, समाज की सेवा में ये संस्था जुड़ गई। इतनी सारी कार्यवाही हर 15 दिन, हर 15 दिन में एक ये कार्यवाही पूरी करना, 50 साल तक। इमेजिन व्हाट प्रमुख सिंह महाराज has done upon this earth। उनका जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, तो उनके जीवन में से ये सीखना है। उनके जीवन में भी उन्होंने क्राइसिस देखी, अपोजिशन देखा है, क्रिटिसिज्म देखी है, कोर्ट जजमेंट्स उनके प्रोजेक्ट के विरुद्ध आए, वो देखें, लेकिन अटल रहे, अभिगम सही रखा, और कभी निम्न प्रकार के विचार अपने अंतर में नहीं आने दिए, मन कभी ढीला नहीं पड़ने दिया। लंदन में बड़ा मंदिर करना था, 90 की बात है, 1990 की। एक जमीन प्रमुख स्वामी महाराज की बीएपीएस संस्था ने खरीदी, वो नीजडन एरिया में थी। तो वहां सब प्लान्स वगैरह तैयार तो हो गए, लेकिन लोकल जो नेबरहुड था, उन्होंने एक केस दर्ज किया कोर्ट में बीएपीएस संस्था के विरुद्ध कि ये लोग यहाँ मंदिर बनाएंगे, उनके बहुत सारे अनुयायी यहाँ आएंगे, दिन भर भीड़ रहेगी, और रात को ये लोग 12 बजे तक घंट बजाएंगे, कुछ आरती करेंगे, कुछ ढोल बजाएंगे, तो हमारी पीस और प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने कहा कि ऐसी बात नहीं है, सभी मंदिर में, देवस्थान में रात को 9 बजे तो मंदिर बंद हो जाता है, कोई प्रवृत्ति नहीं होती उसके बाद, लाउड स्पीकर नहीं चलते हैं। फिर भी केस दर्ज हुआ, केस चला, हमने भी एक अच्छा एडवोकेट रखा था, उन्होंने भी रखा था, सिग्नेचर कैंपेन नेबरहुड में चला, उन्होंने भी सिग्नेचर कैंपेन चलाया, हमने भी चलाया, और उनके पास वो लोकल्स थे, हम तो बाहरी थे, उनको ज्यादा सिग्नेचर मिली, और सभी कुछ प्रेजेंटेशन था। तो कोर्ट ने यह जजमेंट दिया, फुल एंड फाइनल जजमेंट, कि बीएपीएस संस्था यहाँ मंदिर नहीं कर सकती। और वो ये बहुत ग्रैंड मंदिर था, अक्षरधाम जैसा। प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ उस वक्त भारत में थे, बड़ौदा में थे, और लंदन से हमारे ट्रस्टी श्री ने फोन किया कि स्वामी जी, हम केस हार गए, अब वहां हम ये प्रकल्प नहीं कर पाए। ये फुल एंड फाइनल जजमेंट। किसी भी व्यक्ति के लिए अपना सपना टूट जाना, अपने सामने पूरा स्वप्न बिखर गया, कोई भी व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। इट वॉज अ शॉक फॉर प्रमुख स्वामी महाराज, इट वॉज अ सीवियर सेटबैक फॉर प्रमुख स्वामी महाराज एफर्ट्स फॉर सत्संग एक्टिविटीज फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी देयर इन लंदन एंड इंग्लैंड एंड यूरोप एट लार्ज। वो हमारा यूरोप का हेडक्वार्टर्स था और है लंदन। लेकिन जब ये शॉकिंग न्यूज आए, प्रमुख स्वामी महाराज का रिस्पॉन्स क्या था? देखो, एक पर्सनल लाइफ में क्राइसिस आई, तो प्रमुख स्वामी महाराज का रिस्पॉन्स क्या था? हमारे एक बड़े संत सदगुरु वर्य परम पूज्य विवेक सागर स्वामी ने यह प्रत्यक्ष देखा, सामने ही खड़े थे। पहला वाक्य प्रमुख स्वामी महाराज बोले, और कुछ आपको प्रवचन में याद ना रहे तो इतना याद रहे, पहला वाक्य प्रमुख स्वामी महाराज बोले, जैसी भगवान की इच्छा। He stabilized himself. He calmed himself down. Then दूसरा वाक्य वे बोले कि हमने तो अपना पुरुषार्थ कर लिया था, अब जो भी परिणाम आया हम स्वीकार। एक्सेप्टेंस। यू गेट स्ट्रेस्ड आउट, बोग्ड आउट, इमोशनल ब्रेकडाउन आता है, डोंट एक्सेप्ट द थिंग्स, एक्सेप्ट द हैपनिंग्स। मेरे जीवन में नहीं बनना चाहिए। क्यों भाई? तू ऊपर से आया है, तो देवलोक से आया है, 7 बिलियन की पॉपुलेशन में ये बनना संभव है, किसी के भी जीवन में ये बन सकता है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं बन सकता? नहीं, मेरी लाइफ तो गुडी गुडी जानी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। हमारे सभी के कर्म होते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता ही है। उसमें यही सोचना है कि प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए, काम की सफलता के लिए मैंने अपने पूरे रिसोर्सेज रख दिए हैं, हाँ रख दिए, बस फिर जो परिणाम आए मुझे स्वीकार करना है।
Success and failure are part of life. You have to accept both and work your way out. Simple. तो दूसरा एटीट्यूड प्रमुख साईं महाराज ने ये रखा कि हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया था, पूरे रिसोर्सेज लगा दिए थे, जो भी परिणाम आया स्वीकार कर लेते। और तीसरा विचार, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये विचार रखा, ये बोले भी कि देखो हम सब ने साथ में बैठ के ये तय किया है कि बड़ा मंदिर वहां बनाना है, भारतीय संस्कृति का एक आदर्श दर्शन पश्चिम के लोगों को वहां कराना है। तो ये नक्की हुई बात है, हमने ये बात की है, तो ये जरूर करना है। आप सब लोग साथ में बैठ के विचार करना शुरू कर दो और कोई जगह ढूंढना शुरू कर दो, लेकिन जो तय किया है कि वहां करना है तो जरूर करना है। Forget what has happened, now start the new chapter in your life. ये बहुत बड़ी सीख है। और नई जमीन वहां के हमारे स्थानिक ट्रस्टी ने ढूंढ डाली न्यूस्टन में, वहां बड़ा मंदिर बना, स्टोन्स, ग्रेनाइट, मार्बल सब यूरोप से आते थे कंडला में, कंडला से राजस्थान जाते थे, गढ़ाई होती थी, वापस कंडला आते थे और कंटेनर्स में शिप में वहां लंदन जाता था। फर्स्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था वो, बड़ा इतना बड़ा कि मेड इन इंडिया एंड असेंबल्ड इन लंदन। इट वाज अ मास्टरपीस। और जब बना 1995 में, तब रीडर्स डाइजेस्ट ने लिखा कि इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आज भी वो प्रेरणा दे रहा है। लंदन की एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाकी नहीं है जिनके स्टूडेंट्स वहां ना आए हो। और आर्किटेक्चर की दृष्टि से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से, और जो वाइब्रेशंस वहां के जो वाइब्स हैं उसका उस दृष्टि से, और वहां जो अभी वो पूरी प्लेस जो मैनेज होती है वो मैनेजमेंट की दृष्टि से कहीं ना कहीं सीख लेके जाते हैं, निबंध लिखते हैं, शॉर्ट एसेज लिखते हैं। और आज 2000 के साल में, द टर्न ऑफ द मिलेनियम, इट वाज टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग्स ऑफ लंदन। तो देखो, क्राइसिस से हारना नहीं है। तकलीफ आई, अपोजिशन आया, डिस्टर्बेंस आया, कुछ मिसमैनेज हो गया, उससे डरने की जरूरत नहीं है। एटीट्यूड ये रखना है कि करेंगे, कर पाएंगे, लेट्स गो फॉर द ऑल्टरनेटिव। देखो, ये ऑल्टरनेटिव है कि नहीं? अच्छा, गणपत यूनिवर्सिटी अगर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट चालू होते तो हम आपके पास आते और बात करते, तो अभी नहीं आ सकते। एक सोशल डिस्टेंसिंग है, अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चालू नहीं हुई है। तो देखो, ये वेबिनार पे हम लोग मिल गए, ऑल्टरनेट है ना हमारे पास। तो देखो, ये ऑल्टरनेट, हम घर बैठे ये बात करते हैं और आप सुनते हैं। तो कहने की बात यह है कि देयर इज एन ऑल्टरनेट टू एवरीथिंग। ये भी एक विचार क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए मन में रखना। देयर इज एन ऑल्टरनेट टू एवरीथिंग। If one door closes, the other door has to open. It opens, it will open, rather it is already open. You don't see it. आप नहीं देख रहे, बाकी तो दरवाजा खुल गया है। और अंतिम बात ये करनी है, भगवान पे श्रद्धा रखना। जैसे माता पिता पे श्रद्धा है तो वयम अमृतस्य पुत्रः, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। भगवान पे श्रद्धा रखना। बहुत अच्छी कहावत है अंग्रेजी में कि if God rubs you against a stone, if God rubs you against a stone, then keep patience and keep a thought that he is polishing a gem out of you. कितना अच्छा विचार है। मतलब भगवान ने अपने जीवन में कोई परिस्थिति खड़ी कर दी कि आपको बहुत तकलीफ आई, he is rubbing you against stone. Keep patience, धैर्य बनाए रखो। He will produce a shining gem out of you. And if God takes you to the edge of a cliff, of a mountain, and throws you from there into a 10,000 feet deep valley, then also keep patience, because either he will be down there under to catch you, or he will give you wings to fly. कितना अच्छा ये विचार है, कितनी अच्छी ये बात। तो श्रद्धाएं बनाए रखना कि भगवान हमारा दुश्मन नहीं है। ये परिस्थिति में से मैं बाहर आ जाऊंगा, वो मैं श्रद्धा और भक्ति रखूंगा तो मुझे जरूर कुछ प्रेरणा भगवान करेंगे। और की हुई है, कई लोगों को ये प्रेरणा मिली है। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन हमने बहुत नजदीक से देखा है, उनका जीवन चरित्र भी अभी प्रस्तुत हुए हैं,
उनके प्रथम 3 भाग, उनके जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि उनको भगवान ने एक अटल श्रद्धा दी कि भगवान जो करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं। भगवान जो परिस्थिति का निर्माण करते हैं वो सभी के अच्छे के लिए, अभी दिखता नहीं। Sometimes you have to go 2 steps back to take a big leap. प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये श्रद्धा बहुत बड़ी थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो till the age of 95 kept on growing the 162 different kinds of activities that we do worldwide. और हमारे जैसे 1200 संतों को उन्होंने दीक्षा दी। It's a big achievement for anybody. और वे दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में घूमे गए, सभी को ये सत्संग की शिक्षा दी, अध्यात्म सभी को सिखाया और 3.5 लाख से ज्यादा घर वे गए, निर्व्यसनी जीवन जीना सिखाया, लोगों को संस्कृत किया, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और एक चारित्रवान समाज उन्होंने तैयार किया। तो ये श्रद्धा से होता है। और now it has been scientifically proved, ये बात से मैं अपना प्रवचन पूरा करूंगा। Now it has been scientifically, clinically, experimentally proved by the University of Philadelphia and University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg और Dr. H.G. Quinn ने साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर ये सब्जेक्ट्स पे लगा के, मतलब जो प्रयोग में जो व्यक्ति शामिल थे उनको साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से टेस्ट किया कि जब वो प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो किस प्रकार के हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। तो जब आप स्ट्रेस में हो, क्राइसिस में हो, टेंशन में हो, गुस्से में हो, तकलीफ में आ जाते हो, इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हो, तब आपके शरीर में 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक कॉर्टिसोल है और दूसरा है एपिनेफ्रिन। ये स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स है, स्ट्रेस क्रिएटिंग हार्मोन्स है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की आपकी धड़कन बढ़ जाती है, पसीना छूट जाता है। उसी वक्त अगर आप प्रार्थना में जुड़ जाए, भगवान के नाम स्मरण में जुड़ जाए, तो एंडोफिन नाम का एक हार्मोन भी रिलीज हो जाता है। ब्रेन कमांड देता है और ये एंडोफिन नाम का जो हार्मोन है उसमें ताकत है, वो कॉर्टिसोल हार्मोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन को दबा देता है, उसका प्रभाव कम कर देता है। और एंडोफिन हार्मोन में ये ताकत है, वो आपको कूलनेस, कामनेस, स्टेबिलिटी वो आपको प्रदान करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। मैंने आपको यूनिवर्सिटी के नाम दिए, मैंने आपको प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स के नाम दिए, मैंने आपको हार्मोन्स के नाम दिए। आप गूगल पे जा सकते हो, किसी एक्सपर्ट को पूछ सकते हो। तो स्पिरिचुअलिटी में ये ताकत है, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति में ताकत है। ड्यूरिंग क्राइसिस, ड्यूरिंग सेटबैक्स, फेलियर्स, इट कैन गिव यू कामनेस एंड स्टेबिलिटी। कामनेस रही, स्टेबिलिटी रही, तो आप अच्छे विचार कर पाओगे, यथार्थ भावना आप में से व्यक्त होगी, आप रिलेशनशिप्स क्रिएट कर पाओगे और यही रिलेशनशिप से, यही सही विचार जो नॉलेज की वजह से, लेकिन कामनेस और स्टेबिलिटी के फाउंडेशन से अच्छे विचार आएंगे तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे। यू कैन कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये थोड़ी चंद बातें थी टू टर्न योर क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। My all prayers for all you students, for all you faculties and all the live audience in this webinar today. May Bhagwan Swaminarayan, may Guru Pramukh Swami Maharaj, and may our present Guru, Param Puja Mahant Swami Maharaj, bless you all. आपको बल दे, आपको बुद्धि दे, आपको शक्ति दे कि आप इस क्राइसिस को एक छोटी सी कोई अवसर में आपको परिवर्तित कर सके, कोई एक मौका आप ढूंढ सके ये क्राइसिस में, and you can come out of this and you can be a wonderful person for yourself, for your family and for the society at large. Thank you very much and again my many prayers for you. ખૂબ ખૂબ આભાર પૂજ્ય જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીજી। આપના વક્તવ્યને સાંભળ્યા પછી હું એટલું જરૂર કહીશ કે બદલાય જો દ્રષ્ટિકોણ તો અરમાનો પણ બદલાઈ શકે। આ કાળા માથાનો માનવી સંકટને પણ સફળતામાં ફેરવી શકે। સફળ થવાના આ સંકલ્પ સાથે પ્રવર્તમાન મહામારીનો સામનો કરવા આપના અમૂલ્ય સૂચનોને અમે અવશ્ય પાડીશું એવી સમગ્ર ગણપત યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી ખાતરી આપું છું। આ કાર્યક્રમના આયોજન માટે
યુનિવર્સિટીના તમામ પદાધિકારીઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને સાથે સાથે જે કોઈ પણ શ્રોતાગણ આ કાર્યક્રમની અંદર જોડાયા છે એ તમામનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. કાર્યક્રમના અંતમાં હું તમામ ઉપસ્થિત પેનલ મેમ્બરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાનો વિડીયો ઓન કરશે અને આપણે એક સ્ક્રીનશોટ સંભારણું જે છે એ આપણે લઈશું.